Okay, so what did we discuss in the last lecture? Can anybody summarize? Can you all see the slides? Can anybody summarize what did we study in the last lecture? Anyone? So control routine, control store, इसके बाद Okay. So this is a sample instruction. You have some control signals getting activated at each time step. So you have PC out, MAR in, something like this. So for each time step you can actually write, if you write them down, like one PC out is getting activated at T1, then 0 1 0 0 1 0, something like this. So what is this one execution of activation of these control signals for one time step called? There is an official term for it, if you guys remember. control word. Yeah, micro instruction or control word. Instruction or control word. Each of them, you have a set of them happening for each of the time step. So a set of micro instructions for a certain instruction is called as, a set of micro instructions for a certain instruction is called as, Micro routine, it's called as micro routine. Where is this micro routine saved at? control store, Control store or control memory. Okay, so we have seen how, okay, what were the two implementations through which these control signals are implemented? दो तरीके से implement अपन ने करते हुए देखा था. One first one was, this implementation is called as, what is this implementation called? microprocessor control unit, And the other one which we discussed in the previous lecture, what was that called? hardwired control unit. Yeah. Why it is called hardwired? How it was implemented, the logic of all the things, how it was implemented. What was the basic essence of it? Was it based on combinational logic? Logic gates. So combinational logic means gates. It was implemented through gates. Hope you remember. And MuPC, that is micro program control unit. Is this a software-based approach or a hardware-based approach? Which one? Is this a software-based approach or a hardware-based approach? Are we implementing the logic through certain already implemented gates, or we are having a program through which we are actually doing this? This is a software-based approach, not a hardware-based approach. Hardware-based approach is this hardwired one. Okay, so in this, the first address of the micro routine is given to the new PC. We have discussed that these micro routines for all the instruction sets are actually stored inside this control store or control memory. So each control word is stored there. So certain names such as micro routine, micro instruction, control word, control store were there. We have seen the execution, one of the execution for a sample instruction, that was add R1 R2. Was this discussed in the last lecture? Do you guys remember this? Yes, sir. Okay, so you have all the control signals listed on top of it. So that is PC in, PC out, MAR, and all of them are listed here.
There can be some other possible ones we have not listed here, like run and continue, run and end. Then these are the various time steps. So you have T1 to T6 time steps are there, and then and each of the time step. Can anybody just tell me what are the first steps for the add R1 R2? So I think we can do PC out, then MAR in, then read, then select, then add, then Z in. Z in. Do you remember the logic behind this select? We have two selects. What are the two selects which we are taking in the mux? So one is a temporary So register, one and is one is 4. 4. Yeah, one is the select Y and the other one is select 4. 4. Okay, so this goes as an input in this mux. 1Y, 1Y. This goes into what? The output of this mux goes into which functional block? So ALU. ALU. So when you have to do increment the PC and say this PC is actually attached here. PC is attached here. When you have to do PC plus plus, what will be the control signals generated? Can anybody tell me? When you have to increment the PC value, what will be the control signals which will be generated? So first it will go to PC out, then it will go to Y in. No, yes sir. Then add होगा +4. Then Z in okay. वापस it will go to PC. PC out के बाद Y in होगा, sure. PC डायरेक्ट सिस्टम बस से कनेक्टेड है. तो सर डायरेक्टली select 4 कर लेंगे सर. तो PC out के बाद दूसरा क्या होगा? Select 4. 4. Then what will be the other control signal? So फिर add. ठीक है. इसके बाद क्या होता है? If anybody Z in. remembers, Z in. Z in. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है? ये वैल्यू अपने को कहाँ डालनी होती है? Z की. So PC से Z out करें, PC वापस डाल देंगे. Yeah. So we'll do Z out and then we'll do PC in. Am I right? Yes sir. Yes. So ठीक है. तो इसी के लिए the same thing which we have done for each of these time steps, we have written in this form. So this is the, we'll discuss what it is exactly called. For T1 time step, you have PC out activated, MAR in activated, read, then you have select. Select इसके अंदर we have discussed select. We have to do 4, then add and Z in. We have discussed this example in previous class, I guess. So today we'll discuss the branch one. That will make more sense. Okay. Okay. One question I need to ask. After PC++, we are putting the values inside PC. So we are doing PC in. We are also doing Y in. Why we are doing Y in? So like branching stuff of Sorry. Sorry, anyone? What we are saying? तो उसको टेम्पररी रजिस्टर में करके फिर बस में ट्रांसफर. Can anybody elaborate over this? Incremented PC value ko we are keeping inside the PC as well as in YN. But if we have discussed it is only useful in case of a branch. But for all the other instructions also we have seen that we keep YN as high. Do you remember why? Why we keep YN as high in T2 time step for most of the instructions? Why do we do that? शुरू से पहले तो step में सिर्फ PC इंक्रीमेंट कर रहे होते तो हमें पता नहीं होता कि ब्रांचिंग होगा कि नहीं होगा, आगे तो छोड़ के रख लेते हैं. Yeah, so till which step we are not sure whether which instruction is there. Opcode के बारे में अपने को कब तक नहीं पता होता? T3. T3 till what is this cycle called? Fetch cycle. Fetch. Yeah. So we have not done the decode cycle. Decode happens when IR sends that to the IR decoder, the instruction decoder, and there it comes to know ki what is the exact opcode and whether the other operands are actually needed or not. So till the third time step, Y in we are doing because we are keeping the value of
incremented PC. We have discussed this in the previous example. So, okay, till third time step, most of the things will remain common. Do you guys remember what will be the fourth time step for the branch? This is an unconditional branch. T4 क्या होगा? I am not discussing till T3. T1 से T3 common है. T4 में क्या होगा? The incremented PC value is now inside y in. So will we use y in? What will happen in the fourth time step? Anyone remember? Anyone? Are we going to use this y incremented PC value which is present in y? Is it connected through select? अभी तो तुम लोगों ने बोला ना mux Yes, के sir. थ्रू ALU में कनेक्टेड है, तो Yes, जीरो sir. वैल्यू जब अपन सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट y करते हैं बेसिकली. यू रिमेंबर? सेलेक्ट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब होता है सेलेक्ट y. तो वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ y, वी आर एडिंग इट with what? We are adding the incremented PC value with what? What is there in IR? What is there in IR? Anyone? Something called offset. What was offset? ये याद है, भूल गए? ब्रांच में ऑफसेट को we added to the y value, that is incremented PC value, and through that the program counter now will now focus on to the branch instruction. ये याद है? Do you So remember भूल गए this? sir. Okay, So so भूल गए branch, sir. हाँ okay okay ठीक है. Branch instruction में you have like PC is pointing towards this memory location and it was incrementing after each step. Then you have a go to unconditional branch and now it has to focus on this memory address. So for this we also keep the PC value in y in. अब इस y in को will add it with IR offset. So now the PC, now this value has to be fed inside the PC क्योंकि normal execution अब यहाँ से start होगा. यहाँ पर कहीं return एक control signal होगा. From that return control signal, again the PC will have to point towards that, but that is not considered in this. We're just talking about कि branch में जाने के बाद how the program counter will work. So the updated memory address is now inside y in plus IR, which will be fed to say z out, and through that it will be fed to z PC in. ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर रिटर्न वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग. इज इट क्लियर? अरे पीसी बेसिकली तुम लोग क्या कर रहे हो कि मेमोरी एड्रेस जो ब्रांच जब आता है, अनकंडीशनल ब्रांच आता है, तो पीसी ही जो होता है वो दैट टेल्स यू वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज. बट नाउ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन अनकंडीशनल ब्रांच, सो इट हैज टू गो टू दिस सर्टेन मेमोरी लोकेशन. यहाँ जाएगा कैसे? यहाँ जाएगा वाई इन और आई आर ऑफसेट जब अपन करेंगे. ऑफसेट निकालते कैसे हैं? दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव एड्रेसिंग. होपफुली यू हैव स्टडीड इट. अगर नहीं तो इसको रेफर करना है. इसको रिलेटिव एड्रेसिंग का एक फॉर्मूला होता है कि नेगेटिव माइनस कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, all those things. So according to that the offset is actually calculated. We actually add the value of incremented PC with the IR offset, और उस वैल्यू को we feed inside PC again so that PC can start working at the branch location. जब when there is a return condition in the branch, it faces a return condition, it has to go back to the original program again. That is not implemented here. बस PC की updated value with the at the branch location is updated here. ठीक है? Is it clear? So Yeah. तो मतलब वो सिलेक्ट 0 कर रहे हैं एंड आईआर आउट कर रहे हैं, फिर ऐड करके जेड इन में डाल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में जेड आउट करके वापस डाल दे रहे हैं पीसी में. ऐसे मत करो, डेटा पाथ सोचो, क्योंकि ये तो फिर वो वाली बात हो जाएगी ना, कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से ऑन कर रहे हैं. डेटा पाथ सोचो. ये डेटा पाथ क्लियर है? दिस वन. यस सर.
ये डेटा पाथ क्लियर है ना? तो इस डेटा पाथ से कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने की कोशिश करो। ऐसे मत करो कि सेलेक्ट वाई कर देंगे देन वी डू ऐड, ऐसे मत करो, क्योंकि ये डेटा पाथ व्हेन दिस विल बी क्लियर टू यू, कंट्रोल सिग्नल्स तुम खुद ही जनरेट कर लोगे। ठीक है, अगर ये डेटा पाथ क्लियर है तो थर्ड स्टेप के बाद तुमको बेसिकली नेक्स्ट एड्रेस पे प्रोग्राम काउंटर को ले जाना है। तो वो कैसे करोगे? हाउ यू विल डू दैट? यू विल ऐड द वैल्यू विच इज लोकेटेड इन वाई विथ द IR ऑफसेट। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, y की वैल्यू अपन सेलेक्ट कैसे करेंगे? बिकॉज आवर सर्किट इज कनेक्टेड थ्रू अ मक्स। y की वैल्यू मक्स से कनेक्टेड है। वैल्यू सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट की वैल्यू जब अपन 0 रखेंगे, when we do select equals to 1, what is the value of what is the taken as an input into ALU when we do select equals to 1? 4. 4 हो जाएगा ना? ठीक है ना, ये तो क्लियर है। तो फोर्थ स्टेप में वी हैव टेकन एक्चुअली द y वैल्यू एंड एडेड इट टू व्हाट? उसको ऐड किसके साथ किया अपन ने? IR ऑफसेट से। मतलब IR में क्या है? IR ऑफसेट से। IR ऑफसेट में बेसिकली ब्रांच की लोकेशन है। ठीक है, वो कितना, मतलब अपने को हाउ मच वी हैव टू गो लाइक इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड्स इन द मेमोरी लोकेशन। इन दोनों को ऐड करके वी एक्चुअली पुट इट इनसाइड Z। ये लोकेशन ऐड करके अपन ने टेम्परेरी रजिस्टर में डाला। टेम्परेरी रजिस्टर से फिर यही अपडेटेड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू वी एक्चुअली फीड इनसाइड PC, और PC देन विल स्टार्ट मूविंग ऑन दैट ब्रांच लोकेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? एक बार Yes, sir. इसको एक बार खुद भी करके देखना। देयर कैन बी वन मोर कंडीशन, एक सिक्स्थ कंडीशन हो सकती है कि अगर यहाँ रिटर्न आ जाए, एक यहाँ रिटर्न आ जाए, इफ दिस ब्रांच encounters a return, then it has to go back to here which is not included here, so you can actually identify कि उसके लिए क्या कंट्रोल सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो एक बार इसको देखना। अच्छा, सो द इम्प्लीमेंटेशन अपन इसको बेसिकली दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। there are other ways also, but right now the fundamental ways is horizontal versus vertical. What we have discussed till now, that is a horizontal one. So what happens in horizontal, each control signal is represented by a bit in the micro instruction. So each control signal, इसको basically each control signal मतलब 1 0 0 1 0, control signal 1, control signal 2, control signal 3, all them. So this is called as a control word, this whole, and these individual bits which we are enabling or disabling is called as a micro operation also. There is one more now word for it, this is called as a micro operation. ठीक है, इसको अपन कंट्रोल सिग्नल्स को एक्टिवेट करना भी कहते हैं और इनको अपन माइक्रो ऑपरेशन भी कहते हैं इन ईच ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन जिसको अपन कंट्रोल वर्ड भी कहते हैं, उसके अंदर हर बिट्स, हर कंट्रोल सिग्नल जिसको अपन एक्टिवेट करते हैं, उनको अपन माइक्रो ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माइक्रो ऑपरेशन? क्योंकि ये टर्म्स तुमको दिखाई देंगी कहीं कहीं बुक्स में, and this will get confusing at times कि what is a micro operation, what is a micro routine, what is a control word. Is it clear what is a micro operation? So yeah, so for one each of the micro instruction, when we are actually giving each of the control signal one bit in a memory or some bits in a memory, then and we are enabling it, do you guys think, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं। Okay, so for T1 step, do you guys think कि अपन ने सबको सारे कंट्रोल सिग्नल्स को एक एक बिट मेमोरी दे दी, वन बिट मेमोरी दे दी, एंड वी नो दैट कंट्रोल स्टोर जो है, कंट्रोल मेमोरी जो है, दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी। व्हाई इट इज़ एक्सपेंसिव? व्हाई इज कंट्रोल स्टोर कंट्रोल मेमोरी एक्सपेंसिव? व्हाई? Why is any memory expensive in terms of what? What is the main factor? The speed. Speed. So speed और cost का कुछ फंडा है. So if the speed is very very fast, so you can imagine we cannot afford to waste the memory inside a control store. So if we have given each of these control signals one bit memory in our control store, do you guys think that कि इस implementation से T1 में we are wasting memory?
we are actually wasting Yes, sir. memory. Why? सवाल जब पता है कि जो 1 है तो बचे हुए 0 होंगे, सब पता ही होगा, तो उस हिसाब से कुछ निकाल सकते हैं फिर. हाँ, तो मतलब तुमको दिख रहा है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जीरोस ज्यादा हैं, Yes, sir. तो कुछ ही जगहों पे 1 बिट आ रहा है, कहीं कहीं आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जीरो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जीरो. So we are actually wasting memory, so which is not recommended and not advisable at any moment of time in the implementation of a hardware. So but this implementation is called as a horizontal encoding, horizontal implementation of the micro instructions. uh, can you guess what can be the advantage of this horizontal implementation? What can be the advantage of it? जैसे मान लो टाइम स्टेप 1 के लिए each of these control signals are actually given 1 bit memory. इसका advantage क्या हो सकता है? Can you guess? Anyone can guess? Disadvantage we have seen कि we are wasting a lot of memory. We are wasting a lot of memory. इसको अपन technical terms में मतलब से micro instruction, micro operation, control word, इससे कुछ relate करके बोल सकते हैं क्या? Can we say something like that? That we are wasting space. So can we write it in reference with the definitions which we have seen? Control word के terms में कुछ लिख सकते हैं? In terms of a horizontal implementation, will the control word size will be larger, बड़ा होगा? अगर हर बिट को अपन हर कंट्रोल सिग्नल को एक बिट दे रहे हैं, तो कंट्रोल वर्ड का साइज जो है बेसिकली वो बड़ा होता है. दैट्स अ डिसएडवांटेज. इसका मतलब वी आर सेइंग इनडायरेक्टली दैट वी आर वेस्टिंग स्पेस एंड वी आर यूजिंग लॉट ऑफ. अभी आप जस्ट अ मिनट गाइस. Yeah, sorry for that. Okay, we are actually wasting space. That means the control word का size बड़ा है, but there is an advantage also. Can anybody guess what is the advantage of it? इसका एक advantage भी है horizontal implementation का. Can anybody guess? Can you activate several signals at a time in one of the time steps? Can you do that? Like in this case, you are activating PC out, MARN, read, select, add, ZIN. What is this called? When we are activating various control signals at a time in one instance. Any word for it? So parallel execution. सही जगह जा रहे हो, parallelism. So we have a condition of parallelism, we have a possibility of parallelism. So in all the computing things, there is always a trade-off. जब भी तुम लोग कोई प्रोग्राम में बनाते हो या कोई भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हो, एक ट्रेड ऑफ होता है. किन किन चीज़ों में ट्रेड ऑफ होता है? What are the things we actually have a trade off in between? When you write a code, what are the two parameters you look? How do you measure the performance of that code? How do you measure the performance of that code? You Time remember? complexity and speed. So कुछ है time, कुछ है space, something to do with space, something to do with time. Is parallelism something to do with time? Do you agree with me that parallelism has something to do with time? तुम ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक बार में एक्टिवेट करके उनको एग्जीक्यूट कर पाओगे. So you are actually achieving parallelism. So are you saving time? You are saving time, but your space is getting long. You're wasting some space. So this kind of a trade-off you will always have to maintain. In this time is in this implementation, you can see the balance is more towards the time.
that you're saving time, but you're losing on the part of the space. So is it clear? The properties and the features of the horizontal micro instruction encoding. There is this other way also through which we can do, that is called the vertical micro instruction encoding. So in this, what we do not look into the time steps. We actually start looking into each of the control signals. So we have to look into, say, PC out at one instance of time. So we will only activate PC out at in one go. Then we'll only look into MAR in, then we'll look into read, then we'll look into MDR out. We can actually implement this. Do you guys think what is the advantage of this vertical implementation? वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का एडवांटेज क्या है? डू यू थिंक कंट्रोल वर्ड का साइज बढ़ेगा या घटेगा? आर वी वेस्टिंग स्पेस और नॉट? Or on which side of the trade-off we are going, to the speed side or the time side? Anyone? You guys understood what is the vertical implementation, na? No, sir. अच्छा, हॉरिजॉन्टल का इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि वी लुक इनटू जैसे टाइम स्टेप्स. सो इसको एक्टिवेट करने के लिए वी नीड लाइक 0 0 1 0. सो इफ यू हैव लाइक 16 सिग्नल्स, सो फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रोल सिग्नल्स वी आर गिविंग 1 बिट ऑफ मेमोरी. और उसके बाद आउट ऑफ देम विच एवर कंट्रोल सिग्नल इज गेटिंग एक्टिवेटेड, उसको अपन 1 कर देंगे. दैट मेमोरी सिग्नल विल गेट 1, विल बी 1. दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इम्प्लीमेंटेशन. इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें कंट्रोल वर्ड का जो साइज होता है, कंट्रोल वर्ड का साइज का मतलब ये 0 0 1 0 जो साइज टोटल नंबर में, ये बहुत बड़ा हो जाएगा. सो इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, यू कैन इमेजिन यू विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ स्पेस. But the advantage of the horizontal implementation is that you can actually achieve parallelism, and you can save a lot of time. But there is an alternate way also, in which we are more tilted towards the time, saving time, and saving the space. That is, in that case, the control word का size जो होगा, that will be less. So that implementation is called as a vertical implementation, in that we actually look on to each of the control signals. We activate each of the control signal at once. Only one control signal is activated at one time. So you look at, say for example, you start looking at PC in. PC in को you are activating at T1. No, you are activating at T2. Yes, you are not activating PC in for any other time steps. Similarly, you can look into PC out. You are activating PC out only for T1 instance. Then you can look into MAR in. You are activating MAR in only at T1 instance. So now you got the idea what is a vertical implementation. We are looking at one control signal at one time. एक कंट्रोल सिग्नल को ही एक्टिवेट करेंगे हर टाइम स्टेप के लिए एक बार में. दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. सो कैन यू गेस द एडवांटेज ऑफ दिस वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? Can you guess whether we are saving some space, we are moving towards speed? What is the advantage of this? Anyone? Can we achieve parallelism in case of a vertical implementation? Can we achieve parallelism? Can we activate several signals at a time in case of a vertical implementation of the micro instructions? Sorry? Can we do that in vertical? We cannot. That's the disadvantage, that we lose in terms of the time. So we are actually, why we lose in terms of a time? Because we are not able to activate several of these control signals. We are not able to activate them at one instance of a time.
We are going to activate only one control signal. So we are if we can't achieve parallelism, can we say that it is a sequential manner we are implementing it? Can we say that it's a sequential implementation because we are looking at one control signal at a time, and we are looking कि ये वाला control signal at which time step will get activated. So the major advantage is that we are saving a lot of control. We are saving a lot of space, and we are losing in terms of a parallelism. So say if you have if you have 7 control signals, and you have to actually implement. Okay, we'll see that in some time. What's an advantage of it? There can be trade-offs between horizontal and vertical micro instruction encoding, sometimes referred. Yeah. Now there is a third one also, but I don't want to discuss it right now because it will add some confusion. Horizontal micro instruction. This is how it looks like. You actually giving a certain bit of memory to each of the control signal in your control store. You have this control store where you're giving each of these control signals. मतलब each of the micro operation को तुम एक एक bit memory दे रहे हो. एक bit, दो bit. It depends on your architecture, what architecture you're following. Disadvantages and advantages of horizontal micro instruction encoding we have seen. We are able to achieve parallelism. We are able to achieve parallelism. So इससे क्या होता है, time बचाते हैं. We save a lot of time. But our control word size is lot. It depends on our control word size depends on what? If on a pseudo or an imaginary processor we have to implement 32 control signals, what will be the size of the control word? And we are giving one bit to each of the control signal. What will be the 32 size of the control word? 32 bits only. Sorry. So 32 bits only. Yeah, 32 bits only. So you can imagine control signals इतने कम रहेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा रहेंगे control signals because you're going to implement a lot of instructions. तो opcodes भी बहुत सारे होंगे. So you can imagine wasting so much space. It's not advisable. There is always a trade-off technique in between both of them. We'll see how that looks like. Now the implementation of vertical, we'll see. Okay, the advantage is that you have a possibility of unlimited parallelism, and disadvantage is the size of the control memory is large. That is, word size is much longer, and the cost of the implementation is higher. So because we are wasting a lot of space. Can you guess how we can actually? Okay, I'll discuss it here. We are going to incorporate a decoder into this while implementing a vertical micro instruction. So in this, what happens is that actually you have certain combination in here, say 001, say for 7, and you just activate one of the control signals at moment of time, depending on the input you are having. So 000 you will activate say C1, 001 you are activating C3. If this is for 3 cross, what decoder? 3 cross 8. So you can actually control these number of signals, and you are just going to activate one control signal at one time. So depending on the input it is getting, it is going to activate one signal at a time. लेकिन अपन ने इस circuit को, we have included this circuit inside our micro instruction encoding. When we are doing that, we are losing onto some time, because iski bhi logic, the implementation of this logic also we have to take into consideration now. To save some space, we actually lost some time. So trade-off may we are now less towards that. So depending on the M control bit, exactly one control signal will be activated, while all others will remain deactivated. At most, one control signal can be activated in a time. So there is no chance of parallelism into this. Since there is no chance of parallelism, and we have also included one more circuitry into it, logical circuitry, that is a decoding circuit. So we are actually slowing down on this process.
सो एडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स मोस्ट स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड साइज, मतलब जो कंट्रोल वर्ड का जो साइज होगा टोटल वो काफ़ी स्मॉल होगा. लो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज कंट्रोल स्टोर के अंदर जो अपन स्टोर कर रहे हैं इसको, वहाँ पे वी नीड लेस स्पेस बिकॉज कंट्रोल वर्ड का साइज काफ़ी स्मॉल है. एंड मोर देन वन कंट्रोल सिग्नल कैन नॉट बी एक्टिवेटेड एट अ टाइम, दैट्स अ डिसएडवांटेज. सो इससे क्या होता है कि पैरेललिज्म जो होता है वी लूज ऑन इन टर्म्स ऑफ अ पैरेललिज्म. सो that's the thing. Parallelism requires sequential activation. If it is not parallel, then the activation has to be sequential in this case. मतलब एक control signal को एक बार में ही activate करेंगे for each of the time step. Hence, more number of steps are actually required. But there is one more technique which actually balances in between the advantages and disadvantages of both the techniques which we have discussed earlier, that is vertical and horizontal, which is called as a diagonal or hybrid micro instruction encoding. Yeah. तो एक बार आप सब वर्टिकल का एक और कोई एग्जांपल करा सकते हैं सर, एक बार मतलब क्लियर करने के लिए. अच्छा, वर्टिकल में एक न्यूमेरिकल विल सॉ इन द लेटर, उसमें तुमको क्लियर हो जाएगा. लेकिन जैसे मान लो तुम्हारे पास सेवन कंट्रोल सिग्नल्स को एक्टिवेट करना है तुमको. 7 कंट्रोल सिग्नल से मतलब कंट्रोल वर्ड का साइज अगर अपन हर कंट्रोल सिग्नल्स को 1 बिट दिया हुआ है तो 7 बिट का कंट्रोल वर्ड का साइज है टोटल. 7 बिट को तुमको इम्प्लीमेंट करना है तो कितना बड़ा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द डिकोडर. 7 आउटपुट्स तुमको जनरेट करने, व्हाट विल बी द साइज ऑफ डिकोडर, कैन यू गेस. 2 raised to power what, 3, 8 will do it. 3 input and you have say 8 output, will it accommodate 7 number of control signals? Yes sir. It will na. So say if you have one combination like 0 0 1, then you will activate this control signal. The outputs of this decoder is control signals, CS2, CS3 and so on. तो तुमको एक्टिवेट एक कंट्रोल सिग्नल को एक बार में करना है. ये किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा यह इनपुट क्या है. इनपुट क्या है यहाँ पे, 3 का बाइनरी कॉम्बिनेशन. वो क्या है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये क्लियर है. सर से एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है सर, लाइक जब मतलब हम सपोज ऐड R1 R2 कर रहे हैं. ऐड R1 R2, तो इस केस में मान लो तुमको एक कंट्रोल सिग्नल को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, जैसे ऐड R1 R2 था, टाइम स्टेप 1 टाइम स्टेप 2, इसमें देख लेते हैं एग्जांपल में. इसके अंदर व्हेन यू लुक इनटू PCN, तो इसका मतलब ये कंट्रोल सिग्नल 1 है. कंट्रोल सिग्नल 1 किन किन टाइम स्टेप्स में एक्टिवेट हो रहा है, T2 में एक्टिवेट हो रहा है, इसके अलावा कहीं एक्टिवेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना. तो इसको जब अगर से ओनली अगर 8 ही यहाँ पे होते या इतने, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है. तो इसके लिए कितना बड़ा डिकोडर लगेगा, देयर आर 16 कंट्रोल सिग्नल्स. व्हाट विल द साइज ऑफ डिकोडर फॉर दिस, 2 raised to power 2 raised to power 4 is how much, 16. So 16, एक जो होता है the last one we actually do not store. So 2 raised to power 5 32, तो पक्का 5 is to 32. ठीक है, ये तो कर लेगा उसको अकोमोडेट. इज इट क्लियर. Yes sir. ठीक है, तो what we need to do into vertical encoding is that we will activate only one control signal at one time. पहले कंट्रोल सिग्नल को देखेंगे PCN को, PCN T2 में केवल एक्टिवेट हो रहा है. सो इन दैट लॉजिक व्हाट विल डू इज विल हैव सम कॉम्बिनेशन इन हियर, से CS1. CS1 अपना PCN को रिप्रेजेंट करता है. यू विल हैव कॉम्बिनेशन से 0 0 0 0 1. इफ दिस कम्स अप देन यू एक्टिवेट PCN. ठीक है, if you have 0 0 0 1 0 then you activate PC out. ठीक है, if you have 0 0 0 1 1 then you activate MAR in. So then you will only activate CS3.
इस तरह से you will implement all the control signals and only one control signal can be activated at one time. ठीक है, is it clear? सर मतलब सर हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम में जितना 1 है उतना टाइम स्टैम्प्स होगा अगर हम वर्टिकल यूज कर रहे हैं. हर कंट्रोल सिग्नल का देखो, हर कंट्रोल सिग्नल का देखो, वो कंट्रोल सिग्नल किन किन टाइम स्टेप्स में एक्टिवेट हो रहा है. उतने नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प्स होंगे सर. हाँ, वो टाइम मतलब हर कितने स्टेप्स में वो एक्टिवेट हो रहा है. हॉरिजॉन्टल में तो अपन पूरे एक इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, यहाँ अपन वैसे नहीं देखेंगे. यहाँ अपन देखेंगे कौन सा कंट्रोल सिग्नल किन किन टाइम स्टेप्स में एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है, एक बार पढ़ना है इसको, कोई डाउट हो तो फिर पूछना. हर कंट्रोल सिग्नल को अपन सेपरेटली ही इसमें इनेबल करते हैं. इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज अपन ने देखे. So this is the trade-off in between. You can see we'll discuss. It actually depends on the mutual exclusiveness of some control signals. We'll discuss it in the next lecture because it needs there is some logic to it, and we'll discuss one numerical also. So that will make things clear कि we'll take an example कि अपने पास से 100 control signals हैं for a hypothetical processor, and इसके implementation में what will be the size of the control word in terms of horizontal, in terms of vertical, in terms of a hybrid, और एक nano भी होता है. So we'll see कि वो what will be the other implementation of these micro instructions encoding looks like. ठीक है, एंड देन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तुम्हारा नेक्स्ट इसके पार्ट वाला, तो विल डिस्कस उसके बाद. आई थिंक देन दिस यूनिट विल बी ओवर. सो कोई डाउट हो तो देन आस्क मी. ओके, सो जस्ट वेट, आई विल डाउनलोड योर अटेंडेंस. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.